পৰিলক্ষিত হৈছে। মন্দিৰৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰলৈকে শৃংখলাবদ্ধভাৱে দীঘলীয়া শাৰী পাতি সকলোৱে বছৰটোৰ বাবে দেৱাদিদেৱৰ কৃপা মনোবাঞ্ছা কৰি শিৱধাম মন্দিৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যেহেতু মহাশিৱৰাত্ৰি আৰু এইবাৰ সকলোৱে দুদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰিব, আমিও ঘৰতে পূজা কৰিলোঁ। ৰাতিপুৱাৰ ভাগত পূজা কৰি এই মুহূৰ্তত তিনিচুকীয়াৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱধামত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু শিৱধামৰ যিটো লাখে লাখে ইমান মানুহ ভিৰ কৰিছে, সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে। সকলোৱে ভগৱানৰ আশীষ ল'বলৈ আহিছে। আৰু মেলা যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে, লগতে মেলাও তিনিদিনীয়া আয়োজন কৰা হৈছে। মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই ইমান ধুনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে শৃংখলাবদ্ধভাৱে, তাৰ বাবেও খুব ভাল লাগিছে। আমি পূজা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া পূজা কৰি মেলা চাম আৰু তাৰপিছত ঘৰলৈ যাম। আৰু সকলোলৈ মহাশিৱৰাত্ৰিৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে যাতে সকলোৰে জীৱনত খুব সমৃদ্ধি মংগল কামনা কৰি। बहुत धन्यवाद। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भक्तों को। और जैसा कि सब लोग जानते हैं, तिनसुकिया में श्री शिवधाम मंदिर में शिवरात्रि का ये महान पर्व जो है बड़ी हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष भी मनाया गया है। काफी लाखों की संख्या में, कई लाखों कहें तो कम होगा, कई लाखों की संख्या में भीड़ है। और इस भीड़ को देखते हुए आज जो लोग महाशिवरात्रि का जो व्रत का पालन किए हैं, वो लोग आज पूजन करने के लिए, अर्चन करने के लिए आ रहे हैं, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। बाकी लोगों से भी अनुरोध है, 26, 27, 28 आइए, मेले का खूब आनंद लीजिए। इस बार बहुत विशाल रूप से मेला लगा हुआ है। खूब मार्केटिंग कीजिए, मेला घूमिए, झूले पे झूलिए और भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हुए अपने अपने घर को जाइए। शिवधाम के प्रधान पुजारी होने के नाते मैं सबको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। धन्यवाद।